everyone. We welcome you today to the annual production of Class 3, Meera, A Life of Devotion, and the Subject Excellence Awards ceremony of the present Class 3 students. But before we traverse the journey of the life of Meera, let us light a luminous flame of love, joy and dedication in the hearts of every member of the DPS Noida family. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Good afternoon, honored guests, dear parents and grandparents. DPS Noida today presents before you an annual presentation, Meera, A Life of Devotion. Meera, the royal princess of the 16th century, has inspired stories and lore that continue to celebrate her as a human who attained divinity in her physical form. She composed over 1,000 devotional bhajans, celebrating her devotion to Lord Krishna, and became the icon of the word devotion itself. We invite you all to live her life and thoughts through this musical presentation that will enthrall you with its beauty, color, heartwarming melodies, and above all, the effort of our children to exemplify the courage of Meera. I invite you all to welcome our dipsides by a thunderous applause. May Meera come alive today before you in the most memorable form and be with you always. Jai Hind. A life of devotion, so pure, serene. Undying love has never been seen. Such trials, hardships she did endure. Rejection, pain, she did conquer. To Meerabai we pay tribute. Her dedication and sincerity. We salute The students of Class 3, DPS Noida, proudly present Meera, A Life of Devotion. Meera. Her very name evokes the purity of divine love. In modern history, she is unparalleled for her tender and spontaneous expressions of devotion, which mark her unflinching spiritual journey. Her poems are an expression of a divine yearning, which move even the skeptic soul, and they give passionate form to the longing of the developed minds of the seers and poets. To know Meera, we must travel through her compositions and reach the kingdom of her pure existence. There at the entrance is the gate of silence, which can be opened only with the resonance of her own lyrics. Once opened, we enter the palace of her inner being, a kingdom that pulsates at the beat of love and song. Let us begin the divine journey with Meera. Meera.
मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीरा का जन्म सन 1498 में हुआ। इनके पिता मेड़ता के राजा थे। गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र में मां ने मीरा को श्री कृष्ण की एक मूर्ति दी। इसी मूर्ति को मीरा ने अपना प्यारा सा गुड्डा बना लिया। अब उसका सारा समय अपने इसी गुड्डे के साथ खेलते हुए बीतता। धीरे धीरे यही गुड्डा अब मीरा का सबसे प्रिय सखा बन चुका था। मीरा सुबह शाम अपने इसी सखा को सजाने संवारने और उसके साथ बातें करने में लगी रहती। होली के उत्सव पर एक तरफ सभी लोग रंगों के साथ खेल रहे थे, पर
मीरा। फिर बाजे घुंघरू ढोल बड़े, ये छलक छलक वो धमक धमक सब निकले हैं पीपी के घड़े, ये लपक लपक वो धुमक धुमक छम छम नाचे परियों के धड़े, ये थिरक थिरक वो मटक मटक, ये छलक छलक वो ढलक ढलक, ये छलक छलक वो धमक धमक, ये लपक लपक वो धुमक धुमक, ये थिरक थिरक वो मटक मटक। होली है।
मीरा का बचपन अपने सखा के साथ खुशी से बीत रहा था। इसी बीच मीरा के विवाह का प्रस्ताव आया। मीरा के मना करने के बावजूद मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। परंतु मीरा तो अपने सखा को ही अपना पति मान चुकी थी। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोए, घड़ी चैन नहीं आवड़े। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोए, घड़ी चैन नहीं आवड़े। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।
कृष्णाय महीपालाय महाकालाय महाकर्ते कालाय महीनाथाय महाचन्द्राय महाभर्ते कृष्णाय महीपालाय महाकालाय महाकर्ते कालाय महीनाथाय महाचन्द्राय महाभर्ते विभवे विधये मालाम्बुजाश्रयाय चक्रिणे बलिने शमिने अवरोधकाय पीतवाससे कृष्णाय महीपालाय महाकालाय महाकर्ते कालाय महीनाथाय महाचन्द्राय महाभर्ते प्रभुजी गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ससुराल में बिताया प्रत्येक दिन मीरा के लिए संघर्ष से भरा था। ससुराल पहुंचकर उसने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया। इस कारण वो सबकी आंखों में अखड़ने लगी तथा उसे दंड स्वरूप एकांतवास दिया गया। एकांतवास तो जैसे मीरा के लिए वरदान था। कृष्ण के भजन अब हर समय उसके मधुर कंठ से सुनाई पड़ने लगे। वो तो सारे बंधनों को तोड़ कृष्ण भक्ति में जोगन बन चुकी थी।
कृष्ण को पाने की खोज में मीरा ने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया तथा वो वृंदावन जा पहुंची। वृंदावन जो कि कृष्ण धाम है, जहां हर गली और मोड़ पर कृष्ण बसते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। अब मीरा के गाय पद सभी जगह प्रसिद्ध हो गए, यहां तक कि महाराज अकबर भी स्वयं उसके पद सुनने जा पहुंचे। तेरो कोई नहीं रोकण हार, तेरो कोई नहीं रोकण हार, मगन हुई मीरा चलीर, मगन हुई मीरा चलीर, तेरो कोई नहीं रोकण हार। लाज शरम कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मान अपमान दो उधर पटके निकसी ज्ञान गली। लाज शरम कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मान अपमान दो उधर पटके निकसी ज्ञान गली। ऊंची अटरिया लाल की बड़िया, निर्गुण सेज बिछी, पंचरंगी झालर सुबह सोहे, फूलन फूल कली, मगन हुई मीरा
बाजू बंद कटूला सोहे सिंदूर मांग भरी, सुमिरन थाल हाथ में लीन हो शोभा अधिक खरी। बाजू बंद कटूला सोहे सिंदूर मांग भरी, सुमिरन थाल हाथ में लीन हो शोभा अधिक खरी। सेज सुख मना मीरा सोहे, शुभ है आज घरी। तुम जाओ राणा घर अपने, तुम जाओ राणा घर अपने, मेरी थारी नाही सरी, मेरी थारी नाही शरीर मगन हुई। मीरा चली तेरो कोई नहीं रोकण हार, तेरो कोई नहीं रोकण हार, मगन हुई। मीरा चली रे मगन हुई, मीरा चली तेरो कोई नहीं रोकण हार। मीरा की अद्भुत भक्ति भावना तथा उसके भजनों ने उसे ईश्वर के और समीप ला दिया। मीरा कृष्ण भक्ति में पूरी तरह रम चुकी थी, परंतु अब भी वो अपनी एक इच्छा पूर्ति की प्रतीक्षा में थी। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। काली दह में नाग जो नाथो, फण फण निरत करता। काली दह में नाग जो नाथो, फण फण निरत करता। वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो जम का फंदा, काटो जम का फंदा, काटो जम का फंदा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा 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 भजो रे मन गोविंदा।
मीरा नाम है श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और प्रेरणा का। मीरा नाम है जीवन के निर्धारित लक्ष्य को पूरी लगन और निष्ठा से प्राप्त करने का। मीरा नाम है हिंदी साहित्य एवं संगीत की अनमोल धरोहर का। मीरा नाम है जीवन में हमेशा आगे बढ़ने और अपने उद्देश्य को एकाग्रचित होकर प्राप्त करने का। We now request our beloved chairperson, Sharda Nayak ma'am, to fill our chest of treasures with her little anecdotes and pearls of wisdom. Ma'am, we request you to kindly address the audience. On behalf of DPS Noida, I want to tell all the parents how much we enjoy having your children here, how much we believe that education is just not the academics we teach them, but this wonderful expression they have of their energy, of their creativity, of their talent in music, dance, and above all, confidence in coming on the stage and doing so well. Let's give them all a big hand. The story of Meera and the bhajans we have all learnt and have heard since childhood. If there are any grandparents here, I want to tell you how much I enjoyed learning the songs from my grandmother. Today is my granddaughter's birthday, so this is my birthday present to her. This country has given us a great deal of things we often don't look upon and don't recognize. Above all, after many years of history of warfare and conquest and fighting for leadership, we had an age when we had what we call the Bhakti movement. And all these saints, Meera, Kabir, Surdas, Tukaram in Maharashtra, Nandanar and Andal in the south, Jayadeva in the east, in every part of the country in one century, we had this huge treasury of people who sang, composed and taught us that God is inclusive, above religion, that everybody was equal in the eyes of God. And what brought us together was our devotion to that great being who has given us life and love. So together, parents, grandparents, teachers, let us resolve today that education is going to make these children grow into holistic, talented, above all, confident, compassionate, loving human beings. Clap, please. A big round of applause for ma'am. Special thanks to Mr. MMS Nanda and our PTA reps, Dr. Juhi Chandra and Mr. Manu for their gracious presence here today.
I would wholeheartedly like to thank our principal ma'am, Kamini Bhasin ma'am. Ma'am, the same devotion that Meera showed in her faith, we see in your single-minded devotion towards our school and well-being of the children. For your perseverance and determination, no matter what the obstacles, you truly deserve the title of modern-day Meera. Thank you, ma'am, for inspiring the students to give off the best, as always. Our heartfelt thanks to our Vice Principal, Ms. Renu Saxena, Headmistress Nidhi ma'am, and our coordinators, Preeti Vyas and Geetika Serene, for their valuable support. We would also like to thank the talented team of Mr. Samir, Mr. Vijay, and Mrs. Preeti Nandan for choreographing, for excellent choral support. Please, as I call out your names. For excellent choral support, we thank Smita, Swati, and Arpita. For creative display, Mr. Kundu, Jasmine, Mr. Tanmay, all scene in charges, and for resourceful leadership to Latika Handa, the rep. And now for the man behind the show, Mr. Biltu Sarkar, for designing and directing this wonderful production. A big round of applause for them, please. We also wish to thank Mr. Dilip for the visuals, Mr. Ram Avtar, Mr. Devi Ram, and Mr. Chopra for technical and admin support. Now, a special thanks to our wonderful dear parents. Without your support and patience, we would never have been able to achieve such great heights. Please now, the loudest applause for the little ones on the stage for actualizing your expectations from us, and their smiles do make our day. Thank you once again for being here with us this afternoon. We have done the props and the decorations for the show, and I really had tears in my eyes by the end of the show. It was awesome. I was the Meera in the show. We have done some production design like props and other set designing for this Meera program, and it is an excellent program, we feel so. 300 children performing, great performance, great coordination. The kids learned about Meera's life. There was so much to learn. This is really nice. It's really hats off to the children and the teachers to conduct such a show, on such a mass scale. And each and every kid looked so beautiful. They performed so nicely. Everything was very amazing. It was a very spectacular performance and a very spectacular show. The music was fabulous. It was so moving. Managing so many children at one time, that was awesome. That was really great. It was mesmerizing. All the dance performances along with the choir, they were beautiful. We thought the show was absolutely wonderful, the way it was choreographed, and what was the best part was the kind of participation, that each and every child of class 3, all the sections, got to participate and perform, and it was all in all a wonderful show. Amazing function, I think, as always. Totally enthralling presentation, completely enrapturing, as you can see on the smiles of all of us. And the best part is Tanshi's got all her grandparents here today to watch the function. So what could have been better? The best thing I perceived, I would say, is how you got Meera merged with Krishna with just that chunni. 320 बच्चों को सबको पार्टिसिपेट कराना स्टेज के ऊपर, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया. एंड ये बच्चे जब आगे जाएंगे, इनको स्टेज फेयर नहीं होगा, जो कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर था. और इस हिसाब से सबको पार्टिसिपेट करा के स्टेज फेयर निकालना, वेदर दे परफॉर्म गुड, वेदर दे परफॉर्म बैड, वेदर दे परफॉर्म एवरेज, बट द आइडिया टू मेक देम परफॉर्म इज़ द वंडरफुल थिंग विच आई लाइक टुडे. मीरा जो एक कैरेक्टर है, उसको कितने अच्छी तरीके से प्ले के रूप में बच्चों के सामने रखा. दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे. कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो ना छूटा हो, और शास्ता ने खास तौर से बहुत अच्छा परफॉर्म किया. मुझे इस बात की बहुत अच्छी खुशी है. I was really impressed by the quality of the show and the characters, how they have portrayed, and the message which it gives. It's all about the devotion. So anything you do in life, the devotion is the most important thing. So that is the interlining message which they have tried to give to all the students. And on the whole, I would say it was a superb effort by the school, the staff, teachers, everyone. And it really brought everyone together for the event, and it was a wonderful experience.